Welcome everyone to this course called the Financial Freedom Series, where we will cover in depth both fundamental and technical analysis and help you understand what is the right investing process for you. We believe that every individual is different and there is no right or wrong way of making money, right? So, whatever suits you, you have to be basically open to exploring all the opportunities and see what is working for you, right? So, with that thought process in mind, this course intends to cover both the fundamental aspects of investing as well as the technical aspects of investing, right? And we will cover both of them in detail. Here, you will learn how to study businesses, how to study financial and accounting numbers, how to understand what is happening in the business, what is happening with the growth, what is happening in the margins, and most importantly, valuation, right? So, this is one of the most least understood uh, ideas out there. Majority of the people who invest in stock markets, they actually don't pay attention to valuation, which is a huge problem, right? So, so we will cover all of these aspects, and then beyond that, we will also cover some of the very important technical indicators that we use as fundamental investors to understand our entry and exit points, right? Or even if you are looking to invest, stay invested for let's say 10 years, 15 years, 20 years, then at what points of time should you average your position, right? If you ask me honestly, we are not the kind of investors who believe in the SIP approach, right? The reason that we are actively tracking the markets and we are active advisors, that's essentially the reason why we don't tell our investors or even our students to take the SIP approach. Not to say that the SIP approach is wrong, just that uh, if you are an active investor, then it makes sense not to do SIP and properly try and time the market. So with that in mind, let's get into the first section of this entire course. And today we will be talking about the psychology of investing, right? And this is something which is the core of the whole entire investing process, right? Psychology needs to be understood. One needs to understand his own self before investing, because unless you figure out who you are as an individual and what suits you, you will never be able to make money in the market, right? So it's a self exploration process. Anything and everything that we teach has to be internalized. And that is one of the reasons why we do not offer weekly courses or overnight courses, right? The intention and idea is to do a long course so that over a period of time you start to internalize these concepts and start putting your money after having built conviction using the principles that we are teaching in this course, right? So with that in mind, let's get started. So in this session, we are only going to focus on the approach and the psychology of an investor, right? Unless you get this sorted out, there is no moving ahead. So in this presentation, we will discuss why stock market is almost like an entrepreneurship, why behavior is more important than intelligence, and what are the two very important things that you need to understand in investing, right? Just like Howard Marks has written a book on very important things, this is again something like that. It's very similar. What are the two important things that you should always note in mind when you're investing, right? And what are the five important traits that you need to have in order to be successful in this endeavor? We'll also look at some of the books that are should be read if you want to become a very good investor. It does make sense to read at least 5 to 6 books which are like industry standard. So I would over a period of time mention these books in my sessions also. But in this session, we'll mention 3 books that I believe you should start to buy and then start reading them one by one. And then we will talk about the portfolio building process or the investment process, right? And this process we need to understand first and then start implementing. Unless you have a process, unless you've defined a process for yourself, you will never become a very good investor. Investing doesn't happen in a haphazard way, right? The world itself is very haphazard.
But if you have to be successful at something, you have to define a process of doing it and then do it consistently with discipline. Either you are a trader or a fundamental investor or a swing trader or whatever you decide works for you, that you need to build a process around it and start to follow that process with a certain discipline. Right. So I want to start with this slide because it doesn't happen overnight. The reason you need to understand that investing is not something that you will figure out in a month, in 2 months, in 5 months, in 1 year. It's not going to happen like that. Right. And that is why I call this entrepreneurship. Right. Anytime you start a business, the way it works is once you start to get into the nitty-gritties of the business, then you start to understand the challenges of the business. And 5-6 months तो आपको केवल बिजनेस समझने में लग जाएगा, challenges नए नए आएंगे. उसके बाद you will start pivoting, you will start to say अरे नहीं ये करते, ये नहीं करते, ये करते, ये नहीं करते, ये करते, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये नहीं करते, राइट. वो फिर आपको 1 से 2 साल लग जाता है ये समझने में कि what is working and what is not working, right? And then from third, fourth year, you start to make money, right? So investing is very similar to entrepreneurship in that way, right? You are jumping into something which will definitely make money, but it's not easy, right? So, and you have to discover this for your own self because behavior wise ये change करता है, right? कोई अगर ट्रेडर माइंडसेट का है तो उसको ट्रेडिंग समझने में करने में टाइम लगेगा. पहले तो उसको फिगर आउट करने में लगेगा कि हाँ ट्रेडिंग सूट्स मी मोर वर्सेस लेट्स से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. देयर आर सम पीपल जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सूट करता है, द ट्रेडिंग माइंडसेट डजंट वर्क फॉर देम. सो दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, राइट? सो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ इन्वेस्टिंग. नो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, जो भी आप कह लो, जो भी आप तरीके से मार्केट में पैसा बनाने वाले हो, आपको अपना खुद का एक प्रोसेस पता लगाना होगा, राइट? इट इज वेरी सिमिलर टू एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो इन द वे कि एवरी टाइम यू आर बाइंग एंड सेलिंग, आप किसी ना किसी के साथ डील कर रहे हो. तो आप 10 बार इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, वो एक डील है. ऐसे बहुत सारी डील्स एक एंटरप्रेन्योर अपने लाइफ में करता है, आपको भी करने. अभी वो डील किस तरह का डील है, अच्छा डील है, खराब डील है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. बट यू हैव टू डील, but you have to do these deals anyway. Third thing, it will take a lot of effort initially to get this thing out, to figure out your process, right? To understand what works, what doesn't work. पीटर थिल की बुक है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है 0 to 1 जाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है वर्सेस गोइंग 1 to 10, राइट? तो ये जो पहले कुछ दिन है ये आपका जर्नी डिसाइड करेंगे. अगर आपने ये प्रोसेस सक्सेसफुली क्रॉस किया तो फिर आप इसमें भी एक्सेल करोगे विदाउट डाउट. एंड उसके बाद का जो स्टेप्स है वो लाइफ में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आप फिगर आउट कर लेते हो पैसा बनाने का तरीका. एंड इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने प्रोसेस डिफाइन कर लिया तो आपको फोकस्ड रहना है. एंड एक चीज समझ के चलनी है कि बुरे दिन तो आएंगे. अभी जैसे हम कुछ दिन से देख रहे हैं मार्केट लगातार करेक्ट हो रहा है, राइट? तो ऐसे फेजेस आएंगे मार्केट में, बट वैसे भी फेजेस आएंगे जब मार्केट आपको बुल रन देगा. आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मार्केट इतना क्यों ऊपर जा रहा है, जैसे आज नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है. बट बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये फेजेस आते हैं, बुरे दिन लगातार आएंगे, अच्छे दिन भी लगातार आएंगे. जब अनलेस यू आर रेडी टू बेयर दीज बैड डेज, तब तक आप अच्छे दिन भी नहीं देख पाओगे, है ना? सो स्टे फोकस्ड, नो दैट दीज डेज विल कम, they will come. You have to survive through these days and then only you can thrive. And once you figured out everything, then it will start to pay you exponentially, right? But ये लास्ट का पार्ट है, जो पूरी मेहनत और शिद्दत से आप करोगे तो यहाँ तक पहुंचोगे. Now, I want to touch a very important concept here, which is applicable to investing as well as trading both, right? And some people think कि अगर कोई IIM से पढ़ा है, NIT से पढ़ा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो एक बेटर इन्वेस्टर होगा. ऐसा नहीं. सी इन्वेस्टिंग इज अ माइंड गेम, इट्स अ बिहेवियरल गेम, राइट? अगर आप बिहेवियरली साउंड है, अगर आप पैनिक नहीं करते हैं, अगर आपका थॉट प्रोसेस शांत है, तो आप इस चीज में नॉर्मली एक्सेल करेंगे वर्सेस समबडी
जो कि आईक्यू में ज्यादा है, बट उसका जो पेशेंस लेवल है या उसका जो रिएक्शन टाइम कह लो आप, या द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, वो नेगेटिव वे में बिहेव करता है या डिस्ट्रक्टिव वे में बिहेव करता है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही स्मार्ट क्यों ना। सो विच इज वाई डिग्रीज डोंट मैटर मच, व्हाट मैटर इज योर प्रोसेस, एंड उस प्रोसेस को आप अपने बिहेवियर के हिसाब से कैसे ट्यून करते। तो अभी मैं आपको दो बहुत ही ऑपोजिट केस स्टडीज बताऊंगा। पहला केस स्टडी इज रिलेटेड टू अ पर्सन कॉल्ड रोनाल्ड रीड, राइट। नाउ दिस पर्सन, when he died, people didn't know कि इसके पास इतना पैसा है। $6 million he just gave it away to local causes. So he was a secret millionaire, कभी किसी को अपने पैसे के बारे में बताया नहीं, always lived a very frugal life, कोई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं, बहुत ही डिसेंट। इनफैक्ट ही वाज अ जैनिटर, सो फॉर अ जैनिटर टू डाई विथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सेविंग्स वाज अ ह्यूज सरप्राइज, और ये एक्चुअली उनके मरने के बाद पता चला। इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं था कि रोनाल्ड रीड के पास इतना सारा पैसा है। एंड अगर आप देखोगे इनका एजुकेशन बैकग्राउंड, तो वो भी बहुत ही एवरेज एवरेज एजुकेशन एंड नो फॉर्मल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग या जैनिटर बनने से पहले वो आर्मी में सर्व करते थे इन वर्ल्ड वॉर 2, राइट। सो कमिंग फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, it was very difficult to conceive कि somebody like this can actually die with so much money. But here it is, right? So what are the behavioral things that you are noticing here? सबसे पहले तो एक frugal lifestyle. So what it means, he's saving a lot of money, right? So ये तो बहुत important चीज है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेव करके उसको डिप्लॉय कर पा रहे हो मार्केट्स में। दूसरी बात, दैट आप जब डिप्लॉय कर पा रहे हो तो आप उस पर अच्छे रिटर्न बना पा रहे हो। तो इसमें लिखा गया है कि ही हैज बीन अ वेरी गुड एट पिकिंग स्टॉक्स, राइट। सो दैट इज समथिंग विच, but he has no formal education also, so please note. So basically he has figured out कि अच्छा ये whatever his formula of investing is, he has figured out कि अच्छा this is how I'm going to pick my stocks, and they do well, right? So the point that I'm trying to make is कि somebody like a janitor also can make millions of money over his lifetime, uh, just investing, uh, if you have the right behavioral mindset. Now let's compare it with this story of a fund manager, hedge fund manager in fact, called Bill Hwang. अब ये बंदा ऐसा है कि he lost 20 billion in 2 days, right? And the reason is that he was over leveraged. उन्होंने ट्रेडिंग पोजीशन ऐसे लिए जहां पे उनको 2 दिन में ही इतने का लॉस हो गया। He went from being a billionaire to nothing, right? And that's purely because of greed and selfishness. So you don't know where to stop. You are so greedy uh, that you've lost your mind and you're putting everything at risk, right? अच्छे log, when they start to become greedy, they leave aside their risk management principles, right? And this takes them down. ऐसा नहीं है कि these people don't understand risk management या इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, right? They have worked in big funds, so they know what is risk management. But the thing is, right when they are taking a bet, they become greedy. The greed takes over, risk management goes to the backseat, and that's when the damage happens. और फिर वहां से कोई रिकवरी नहीं। तो जो वेल्थ आपको 15 साल 20 साल बनाने में लगता है, वो 2 दिन में उड़ जाता है, फिर वो वेल्थ नहीं है आपके पास। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो फॉलो करोगे, अगर आप अपने ग्रीड और सेल्फिशनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये गेम आपके लिए नहीं है, राइट? क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल वर्क अगेंस्ट यू। तो इवन इफ यू आर अ ट्रेडर और एन ऑप्शंस ट्रेडर और अ इन्वेस्टर, इवन ऑप्शंस ट्रेडर आर वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे नो कि कहाँ तक जाना है और कहाँ अपने आप को स्टॉप करना है। उन्होंने अपना फॉर्मूला या इन्वेस्टिंग स्टाइल आप कह लीजिए, प्रोसेस सेट कह लीजिए, they have figured out. They don't want to go beyond that. They will never go beyond that, and that is the key to their success.
और कोई वजह नहीं है, अगर वो चीज वो भूल जाते हैं या नहीं करते हैं या उसको साइड में रख देते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट उनको पूरी तरह डुबा के चला जाएगा। तो आप कुछ भी कीजिए, आप बिहेवियरली अपने आप को कंट्रोल में रखिए, कुछ रूल्स फॉलो कीजिए एंड stick to them no matter what the situation is. Never leave aside your risk management principles. They are your core. They are what keeps you going, right? आज पैसा नहीं बना कोई बात नहीं, कल पैसा बन जाएगा, लेकिन पैसा डुबाना नहीं। अभी आते हैं सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो लाइफ में समझनी है एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। ऐसा होगा आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में, ये बहुत लोगों के साथ पहले हो चुका है एंड ये आगे भी होगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो है, टेल्स विल ड्राइव मेजॉरिटी ऑफ योर रिटर्न्स। व्हाट डू यू मीन बाय टेल्स? टेल्स का मतलब पूंछ होता है, राइट? हियर इन इन्वेस्टिंग व्हाट इट मीन्स इज कि आपके लाइफ में कुछ ही ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको बहुत सारा पैसा बना के देंगे, जो आपके लिए गेम चेंजर होंगे, राइट? लेट्स से 30 years 40 years इन इन्वेस्टिंग, और उसके बाद एट द एज ऑफ 70 80 कोई आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा स्टॉक था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, तो आपको एग्जैक्टली वो दो तीन स्टॉक्स आपको हमेशा याद रहेंगे जिन्होंने आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को चेंज कर दिया, जिसने आपको बहुत पैसा बना के दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होता कि हर ट्रेड में ही पैसा बन गया, नहीं होता है। तो ये जो टेल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये टेल्स मतलब छोटे इवेंट्स, कुछ गिने चुने इवेंट्स होंगे या कुछ गिने चुने स्टॉक्स होंगे जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स बना के दें। मतलब कुछ तो होगा, जैसे मान लो आपने 2 लाख से स्टार्ट किया, तो आपको मान लो 1 साल लग गया 3 लाख पहुंचने में, फिर 1 साल लग गया आपको 5 लाख पहुंचने में। बट 1 साल ऐसा बीच में आएगा जब आप 5 का 10 कर लोगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये एक टेल इवेंट होगा। इसके बाद हो सकता है आपको 1 साल में 10 से 9 हो जाए, उसके बाद फिर आप वापस 1 साल में 9 से 12 पे पहुंचो, राइट? तो ये जर्नी स्मूथ नहीं होती, ये जर्नी, इट्स नॉट लाइक एवरी ईयर यू विल मेक मनी। देयर विल बी years when you will lose money also, and then there will be years when you will make huge amount of money. I mean, obviously in proportion to what you have. So these situations you will witness in life, and you should be at the right time, right place to benefit from these situations, which means you have to be prepared. So अब आपको नहीं पता ये कब आएगा आपकी लाइफ में, बट अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड ही नहीं रहोगे तो आपको तो ऑब्वियसली कभी नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट आपके लिए जगह नहीं है, तो आप, नहीं है, वो आपको आएगा ही नहीं कभी। दूसरी बात कि लाइफ में ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आते हैं। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। जैसे कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ऐसा इवेंट आ सकता है, इस स्केल का आ सकता है। कोविड क्या एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था या नहीं था, डिबेटेबल है। मिस्टर तालेब जिन्होंने ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के डेफिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू हिम कोविड वाज नॉट अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, बट देन obviously a lot of people didn't predict कि हाँ कोविड आ सकता है। So it's a debatable thing, but the point is every once in a while the market will do something that will take your breath away and it will take you down, आएगा ही। और इसलिए आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमेशा रहना चाहिए, ऑलवेज, क्योंकि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट दिस इवेंट। आपकी पोर्टफोलियो 10 लाख की है, 10 लाख से 1 करोड़ की है, 1 करोड़ से 10 करोड़ की है। ऑल थ्रू दिस प्रोसेस आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखोगे, कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट्स भी आएंगी। अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट अपना फॉलो नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओ।
मतलब मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, यू आर जस्ट ब्लॉक्ड फ्रॉम द मार्केट। अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, क्योंकि इवेंट्स तो आएंगे, ऐसे दिन आएंगे, मार्केट आपको हर तरह के दिन दिखाएगा। अगर आप रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर नॉट managing your risk well, then you can get wiped out of the market. You may not survive to invest again the next day, which is why Rakesh Jhunjhunwala very famously, he said, I'm not afraid to make mistakes. It's just that I only want to make one which I can afford, so I can live to make another one the next day. Right? So everybody wants to survive in the market. Only do something that you can completely survive. ठीक है? तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखना, कि कुछ ऐसी इवेंट्स होंगी जो आपकी जर्नी को चेंज कर देंगी, आपको एकदम से नए ट्रैजेक्टरी में पहुंचा देंगी। और कुछ ऐसे भी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा, बट अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट फंडाज क्लियर नहीं है, आप उनको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, देन देर इज गुड चांस दैट दोज डेज विल वाइप यू आउट ऑफ द मार्केट। A lot of retail investors get out of the market during those days. Now, लेट्स फोकस ऑन जो पहली पॉइंट हमने डिस्कस की, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग वाली। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको एक नई ट्रैजेक्टरी में पहुंचाएंगे। अब इसमें लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। सो ब्रैड पिट, रिसेंटली देयर वाज एन अवार्ड सेरेमनी, ही रिसीव्ड दैट अवार्ड, एंड उसके स्पीच में ही सेड, आई हैव बीन बैंगिंग अवे एट दिस थिंग फॉर 30 years. आई थिंक द सिंपल मैथ इन सम प्रोजेक्ट्स वर्क एंड सम डोंट, and there is no reason to berate either one. Just get on to the next, right? So what he is saying कि पिछले 30 साल में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने भी फिल्म बनाए हैं, I could have never said that this project will work and this will not work, right? Obviously everybody want doing something which he knows or which he thinks will work, but then there are things that still don't work, and then there are things which will do wonders, right? So that happens to everybody. In his span, he would have done some movies which would have changed his life, and uh, convert him into a superstar or a very famous actor, right? So the key thing is he never stopped. The key thing is he had a 30 years of career just doing films. I mean, look at the Indian film industry, even the foreign film industry. How many actors actually survive 30 years? If you can survive 30 years, then you will obviously excel at it. But if you can't survive even 2 years, 3 years, 5 years, then obviously there is no career for you, right? So, so the point is, the key is to survive. Can you survive for 30 years in the market? If you can, then you will definitely be rich. There is no point, there is no one person who can say that I have been in the market for 30 years and I have not made money. So that's my point. कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको सारे ही ट्रेड्स अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके लेने हैं, बट उसमें से कुछ ट्रेड्स ऐसे निकलेंगे जो आपको करियर चेंज कर देंगे, राइट? एंड वो चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कितना अच्छा कर जाएगा। आई वांट टू टेक अनदर एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, वॉल्ट डिस्नी ने 1928 में एक मूवी बनाई जिसका नाम था स्टीम बोट विली। ये स्टीम बोट विली का पोस्टर है। So this movie did very well in 1928. And post that, by the mid of 1930s, Disney had produced more than 400 cartoons. But nahi chala, most of them lost a fortune. फिर 1937, just look at this, 1928 and 1937, almost after 10 years, Snow White and the Seven Dwarfs को बनाया गया, उसको लॉन्च किया गया, and in 6 months the movie was the best ever movie for Disney. It made more than $8 million. तो पिछले 10 साल के आई एम गेसिंग जितने भी लॉसेस थे वो सारे रिकवर हो गए, राइट? अब वॉल्ट डिज्नी तो सारे मूवीज यही सोच के बनाया होगा ना कि अच्छा होगा, चलेगा, राइट? एंड 10 years इमेजिन कुछ भी नहीं चला, एंड देन अचानक से एक 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 मूवी आई, स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स, which made a lot of money. But the thing is, you have to be present in the market from 1928 to 1937. You have to keep making movies.
and you have to keep failing at it. And then, suddenly a tail event will happen, and then it will just drive you into the next trajectory. So a single event was the turnaround point for Walt Disney. Similar events will happen in your investing journey also. You have to be there, you have to survive, you have to keep doing, and it will take you somewhere. अभी इसको थोड़ा जो जो एग्जांपल्स लिए वो थोड़े नॉन फाइनेंस थे, बट फाइनेंस वाले एग्जांपल्स लेते हैं. अभी जैसे लुक एट वीसी इन्वेस्टर्स, राइट? सो वीसी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, बट उसमें से कितनी कंपनीज ही हैं जो पैसा बनाती हैं? So this is an analysis from 2004 to 2013. It says that only 0.4% of the companies gave them 50x returns, and only 1% of the companies gave them 20 to 50x returns, right? But majority of the companies, which is 65% or so, actually were loss making. कोई रिटर्न ही नहीं दिया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिया. तो आप देखो बाकी 35% जो है उसमें से भी केवल 1% ने ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया. सो ये जो आपके 1% है, ये आपके हो गए टेल इवेंट्स या टेल स्टॉक्स या टेल इन्वेस्टमेंट्स कह लीजिए. बेसिकली these investments are your multi-bagger investments. This will take you to the next trajectory, right? So ये हर जगह, ये लाइफ के हर जगह ये फंडा फॉलो होता है. जो टेल होता है वही आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स देता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल टेल में इन्वेस्ट करो. आप तो अगर 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 10 में यही सोच के कर रहे हो कि सारे के सारे पैसा बना के देंगे. बट वैसा नहीं होता लाइफ में. लाइफ में ये 10 में से एक ही कंपनी होगी जो आपको 50x 60x रिटर्न बना के देगी, एंड you will still become rich. So that's the funda of tails driving everything. So know that this will happen in your investing journey also. कुछ ही गिने चुने ऐसे ही स्टॉक्स होंगे जो आपको बहुत पैसा बना के देंगे. अभी ब्लैक स्वैन इवेंट की बात करते हैं. जो दूसरा पॉइंट था हमारा कि ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा और आपको उसके लिए रेडी रहना है. सो दिस गाय कॉल्ड रिक Guerin. I had not heard of him for a very long period of time, but apparently he was a third partner in the Buffet partnership, right? So this guy here, Monish Pabrai, as you can see him in the image, he asks a question to Warren ki, what happened to Rick, right? And he said, Rick was over leveraged and he had margin calls, and because of which he had to sell. And his position was 70% down. So basically, Rick was over leveraged, because of which जब 1973-74 में डाउनटर्न आया तो his portfolio was almost 70% down, and he had to sell his Berkshire stocks to Warren Buffett for $40 a share, right? Just look at this number, $40 a share पे उसने वॉरेन बफे को 1970 73 74 में शेयर्स बेचे. Because of his leveraged position, he had to exit. Now look at this chart here. This is Berkshire Hathaway, and $40 is here. यहां पर इधर आज ये शेयर $4,72,250 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है. Let me just write that number to you. $4,70,250 per share. And Rick had to sell these shares to Buffett at $40 per share. Right? So you see where Rick sold and where the market is right now. That happens on Black Swan days. आप मार्केट से बाहर चले जाते हो, फिर आपके पास पैसे नहीं रहते अगले दिन मार्केट में आने के. So if you can survive, then you can thrive, right? If he had not sold his shares, this is the value of his shares. This would have been the value of his shares, and he would have been a rich person today. So
So this example I'm telling you because it's a very famous example. ब्लैक स्वान इवेंट्स आएंगे, आपको सरवाइव करना पड़ेगा. तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ा डिबेट होता है, कि टाइम इन द मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट. अभी आपने मेरे को सुना होगा कि मैं मार्केट को टाइम करने में विश्वास रखता हूँ. आई एम दैट पर्सन हु बिलीव्स इन टाइमिंग द मार्केट. बट लिसन मी आउट. Here we are having a different discussion. The discussion that we are having here is time in the market or timing the market. I will still believe कि time in the market is more important. उसमें फिर जाके अगर टाइम करना पड़ेगा तो मैं करूंगा. Basically, you see what I mean is, there's a famous example here. So there are two investing gurus, Jim Simons, who's a mathematician, and Warren Buffett, right? You know both of them. So Jim Simons has given much higher returns versus Buffett. Almost, it's touching 60+% returns annually, whereas Buffett is somewhere close to 22%. But आप Buffett का wealth देखो और Jim Simons का wealth देखो, look at the money that they have. There's a huge difference. Even at this CAGR, he's not more richer than Warren Buffett. And the entire reason is that Warren Buffett had a much longer investing career versus Jim Simons. Right? Now, Jim Simons obviously is a technical investor. He follows maths. So he is obviously he's obviously timing the market. And what time karke he's making 66%. It's just that he didn't spend a lot of time in the market. This wealth he would have made only in 15-20 years, whereas this wealth has been made over a period of 40+ years, if I'm not wrong, maybe more. So that's the difference, कि आपको एज एन इन्वेस्टर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना है, तब जाके आप ज्यादा वेल्दी हो सकते हो, एंड नॉट वरी टू मच अबाउट कि 25% बना या 20% बना या 15% भी बना. It's more important that you stay invested for 15, 25, 30, 35 years, rather than worrying about the incremental 1 or 2% here and there. So from that point of view, time in the market is very important than timing the market, right? I believe now whatever age I am, and even you as investors, आपके पास जो भी टाइम होगा आप उतना ही टाइम मार्केट में लगा सकते हो, राइट? एंड उसमें आपको मैक्सिमाइज करना है. अभी ऐसा तो नहीं है कि वी कैन गो 20 years बैक एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. जैसे वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 13 एंड स्टिल सर्वाइव टुडे एंड स्टिल इन्वेस्टिंग. आप सोचो, we can't go back 20 years and start investing, right? So we can only do what we have in front of us, and there I will try and get to 50%, 60%. Let's say if I am as capable as Mr. Jim Simons, why not? So from that point of view, I believe in timing the market. But obviously, if you can start investing at 20, 25, people who are listening to this session, if you are at 19 years, 20 years of age, then please start investing, right? Because that 5 years, 10 years advantage that you have, I don't have that. A lot of people in my age don't have that, but you have that. And if you start now, you get additional 10 years to compound your money. And even if you make, let's say 2%, 3% less returns, don't worry about it, because you'll still be more richer than me. That's the point. अभी मोटा मोटा हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की. सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि टेल इवेंट्स होंगे, हमने ये बोला कि ब्लैक स्वान भी होगा, और फिर हमने ये बोला कि टाइम इन द मार्केट is more important than timing the market. Now, when you start to invest, then there are some mental minds that you need to follow. Okay? सबसे and these mental models have been inspired by Charlie Munger. Right? He talks a lot about these Mungers. In fact, you should Google and read up on a lot of what he says, and mostly these are mental models. Just to think straight, सीधा सोचो,
दिमाग क्लियर रखो, कंफ्यूज मत हो. If you start following these mental models, that will give you a lot of clarity on life and investing too, of course. So what he says, one of the traits is invest within your circle of competence and keep expanding that, right? So always start with your circle of competence. कुछ चीज जो आपको समझ में आती है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, वट, जो चीज आपको समझ में आती है, आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाउंड्रीज में रह के करो. Do it within the boundaries of your circle of competence, and obviously try and expand that boundary. Not to say ki, stop learning. In fact, the other way is keep learning more and more. But know where you understand and where you don't understand, and where you can build conviction and where you can't build conviction, and trade on conviction or invest on conviction. दूसरा, practice inversion. So उल्टा कर दो. If you invert things, if you look at it from a different angle, you will get clarity. For example, अगर हम इन्वेस्टिंग में के बारे में सोच रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इसको दूसरी तरह से क्वेश्चन करो. आप पूछो कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है ना. और आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या क्या लूप होल्स है. आपको अगर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट भी क्लियरली समझ में आता है कि हाँ, ये 4-5 रीजंस की वजह से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप अपना रिस्क ज्यादा अच्छे से समझ रहे हो. वर्सेस कि कोई ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, एशियन पेंट्स या एचडीएफसी क्यों अच्छे बैंक्स हैं, क्यों इसमें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए. आप उल्टा करो, आप पूछो कि नहीं, एशियन पेंट्स में व्हाट कैन गो रॉन्ग इन एचडीएफसी, एंड इफ दैट लॉजिक is not that strong, then you can go ahead and invest in this company, right? So always invert. उल्टा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन बी द डाउन साइड, ताकि उसको तो आप अवॉइड कर ही सको. तीसरी बात जो है, जो हमने बिहेवियर में भी कवर किया, वो है पेशेंस की, कामनेस की, कि कभी भी पैनिक सिचुएशन में आके कुछ भी डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है. अभी डिस्ट्रक्टिव कभी कभी समझ में नहीं आता है, बट बेसिकली अगर आप काम रहोगे, थोड़ा सा शांति से सोचोगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. रिएक्ट नहीं करना है चीजों पे. चौथी बात, चीजों को सिंपल रखना है. सो जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखो, ताकि आप एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करो एंड स्टिक टू दोज रूल्स. एंड उन रूल्स में फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. उसको आप अपना मंत्रा बना लो, राइट? मेक इट योर मंत्रा ऑफ इन्वेस्टिंग. इट शुड बी दैट सिंपल. एंड कीप एक्सपैंडिंग योर competence, keep learning, keep reading. Munger says that at this age, even at 90 plus, he is like a walking book types. That is the kind of reading that he does. So just keep reading. Because we are in the first session, I thought it will make sense to tell you a couple of books that you need to start reading, since we are talking about reading. ये तीनों books बहुत ही अच्छी हैं. They cover a lot of different aspects. This is a very fundamental focused book. In fact, ये सारे ही थोड़े उस fundamental angle से हैं. हमारा भी thought process fundamental का ही है mostly. We don't think like a trader. So if you are a fundamental investor wanting to become a fundamental investor, these books are definitely good. Generally, also they will give you a lot of knowledge on how to approach investing, and मोस्टली साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, राइट? साइकोलॉजी, बिहेवियर, ये सब चीजें जो है एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दीज बुक्स विल गिव यू अ गुड डायरेक्शन ऑन दैट. अभी इन्वेस्टर बनने के लिए क्या नहीं चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डिग्री नहीं चाहिए. इनफैक्ट हमारे इस कोर्स में वी हैव अ सेक्शन ऑन हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? सो आपका पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया. हम एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ना सिखाएंगे, एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ. उसमें क्या देखना है, नहीं देखना है, नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, ये सारे हम आपको समझा देंगे. इसके बियॉन्ड आपको अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, आपको जाके सीए करने की जरूरत नहीं है, राइट? नॉट रिक्वायर्ड. दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कोई एडवांस्ड मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स की कोर्स करनी है,
वो भी करने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू वांट टू बिकम लाइक अ क्वांट फंड मैनेजर, है ना, तो मे बी दे विल हैव वन ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स, बट फॉर योर पर्सनल इन्वेस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड, राइट? So there is nothing stopping you, right? You saw in the previous example, somebody like a janitor can actually make so much money. All you have to do is sit through the phase. There'll be different phases. Just learn, keep learning, keep improving your investing style, keep exploring new things, and start realizing what is working for you and what is not working for you. अभी प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोसेस नहीं सेट कर देते किसी भी चीज का लाइफ में, वो चीज आपके लिए एक मशीन की तरह काम नहीं करेगी. सो दिस होल दिस होल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग हैज टू वर्क लाइक अ मशीन, एंड दैट मशीन will be working on a set of rules, and those rules have to be have to come out of the process itself, right? So आप अपने रूल्स बनाओ, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का जो भी आपका रूल है, जो भी आपके लिए काम करता है, whether it is long term investing, whether it is doing just SIPs in mutual funds. I mean, something as simple as that can also be a rule, right? So whatever works for you, figure that out. उसको उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उससे फिर एक पोर्टफोलियो बनाओ. तो आप जितने भी ट्रेड्स लोगे उससे आपकी एक पोर्टफोलियो बनेगी, राइट? तो ये हो गया आपका रूल्स. रूल्स यू गेट इम्प्लीमेंटेड इनटू एक्शन, एक्शन से आपकी बनेगी पोर्टफोलियो. उस पोर्टफोलियो को आप मॉनिटर करो, ठीक है? एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन एन इन्वेस्टिंग जर्नल, ठीक है? एक बुक बनाइए आप, जिसमें आप ये लिखिए कि आपने ये ट्रेड या ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया. व्हाट वाज योर लॉजिक of doing this trade. This will help you because if you go back and read your thesis, it will tell you why exactly you invested in this company, and does that thesis hold today or doesn't hold today, या what went wrong, आपने क्या ऐसा सोचना चाहिए था जो नहीं सोचा जिसकी वजह से गलत होगी, या आपने ये इग्नोर किया. तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपने सबसे पहले इन्वेस्ट क्यों किया था, तो आप उसमें कभी लूपहोल्स नहीं पता कर पाओगे एक्यूरेटली. सो ऑलवेज मेंटेन दिस जर्नल. दिस विल बी योर सेल्फ लर्निंग सॉर्ट ऑफ बुक, जो आपको बताएगा कि आपने क्या सही सोचा और क्या गलत सोचा. एंड इस पे आप रिफ्लेक्ट कीजिए हर 5 महीने, 6 महीने, एक साल पे. आप जाइए अपने पुराने ट्रेड्स को देखिए और आप सोचिए कि आपने क्या अचीव किया, क्या लूज किया, क्यों अचीव किया, क्यों लूज किया, वेयर डिड यू गो रॉन्ग एंड वेयर डिड यू गो राइट, बोथ ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस विल बी अ सेल्फ लर्निंग प्रोसेस. ये आपको खुद ही करना पड़ेगा. आई कैन नॉट कम एंड डू दिस फॉर यू. एंड आप जो अपना जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सपैंड कर रहे हो वो करते रहो. सो यू कीप लर्निंग, expanding your thought process, see if you can refine your rules, make them even better. And ये तभी आएगा जब आप लर्निंग माइंडसेट रखोगे और आप अपने कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करते रहोगे, ठीक है? तो और इस साइकिल को आप जितने बार रोटेट करोगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे. एंड ये जो रूल्स हैं, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी. दिस विल हेल्प यू अवॉइड दोज ब्लैक स्वान डेज. एंड you just keep following the process, refining the process. After a point of time, this will work smoothly. It will start to create a lot of money for you. बट ये आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि अभी शुरू किया और एक महीने में ये परफेक्ट हो गया. नहीं होगा वैसा. जस्ट नॉट पॉसिबल. इट टेक्स टाइम, विच इज वाई वी आर डूइंग दिस कोर्स over a 1 year period. And you should reach out to me. You should ask me questions. We should discuss together what is working for you, what is not working for you, because we will help you figure out what works for you, right? That's what we are here for. Depending upon जैसा भी आपका behavioral knack है, whether you are a trader, you are an investor, you are a swing trader, जो भी आपके लिए जमता है, that
we will help you figure out, but then you have to experiment different things, see what is working for you, and once you've perfected that process, then all you have to do is just keep repeating. Then it becomes a money making machine, right? And it takes time. Let me tell you, 7 years into investing, 8 years into investing, for a lot, for a very long period, it was just haphazard investing, right? But then it took some time to refine that process, and now we are in a situation where we know exactly which type of trades to say no to, कि नहीं ये ट्रेड नहीं लेने का, even when we know कि इसमें पैसा बनेगा, ये ट्रेड नहीं लेना है, not interested. And because we only have a limited amount of capital, तो I am very particular about कि अच्छा किस कंपनी में किस वैल्यूएशन पे ट्रेड लेना है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो भी करते करते समझ में आया है अभी कि केवल लेके बैठे रहने से नहीं होगा. You should be able to liquidate your positions at certain point of time as well, and you should know when to do that. So all of this has come after a lot of learning and spending time in the markets, right? You should start this process for yourself as soon as possible, and with our help, we are there to help you. I'm sure we will help you figure out how to make money for yourself, right? So with that, I end this session. I hope you learned something from it, and let's start to build from here. We will first focus on the fundamental aspects of investing, and then towards the end of this course start and look at the technical aspects as well. Because thought process fundamental ही होना चाहिए. हमारा जो thought process है वो fundamental ज़्यादा है. 80% fundamental है, 20% technical है. आप ऐसा समझ लो. Technical हम केवल entry और exit decide करने के लिए use करते हैं. We are not really traders. We are fundamental investors, but with a knack for technicals. वैसा समझिए.